जब उसको आइडेंटिफिकेशन कराया गया फोटो से तो उसने कहा रविंद्र जैसा, बट रविंद्र नहीं है। PW225 पैरा। सर PW3 एंड PW5 डज नॉट सपोर्टेड। करिए आप जी, रिपोर्ट देख ली आपने? इसका पैरा 12 और 13 पढ़ लीजिएगा। रिपोर्ट का पैरा 12 और 13 पढ़िएगा। सर बट प्रोसिक्यूटर्स कह रहे हैं कि रविंद्र नहीं है। बट छोड़िए। और सर PW9 you started with one argument. Sir, तो please kindly see the DNA report. पहले इसको पढ़िए, पैरा 11, 12, 13 पढ़िए। Sir, I'm not having the complete report. They are giving this much only. This much मतलब? मुझे बस इतना ही मिला था रिकॉर्ड से। इतना रिकॉर्ड मिला था? कॉपी में बस एक ही पेज मिला था। That is already uploaded. अपलोडेड? कहाँ पर अपलोडेड है? यहाँ पर है ना एक्सप्लेनेशन पर। दिस इज डॉक्यूमेंट 679/25 फाइलिंग द एक्सप्लेनेशन ऑन पर्सनल एफिडेविट 679/25 एज पर द कोर्ट्स ऑर्डर माय लॉर्ड एफिडेविट। जस्ट प्रकरण में आरोपी गोलू रविंद्र ऑटोसोमल STR DNA प्रोफाइल की प्राप्त की गई है जो एक दूसरे से भिन्न है, परंतु रिपोर्ट में और नहीं लिखा है। प्रस्तुत रिपोर्ट में हिंदी तो सही पढ़ लीजिए। आप इंग्लिश मीडियम से हैं क्या? प्रस्तुत रिपोर्ट में ऑटोसोमल STR DNA प्रोफाइल का विवरण नहीं दिया गया है। इसे प्रयोगशाला के रिकॉर्ड में संधारित किया गया है। 12 4 व 5 जी। प्रकरण में प्राप्त आरोपी गोलू उर्फ अंजुल व आरोपी रविंद्र परमार के रक्त सैंपल से ऑटोसोमल STR DNA प्रोफाइल प्राप्त की गई जो कि आपस में भिन्न है। प्राप्त परिणामों के आधार पर ये दोनों मोनोजाइगोटिक ट्विंस नहीं है। आगे पढ़िए। 13 तो पढ़िए, पूरा तो पढ़िए। आरोपी गोलू उर्फ अंजुम व आरोपी रविंद्र परमार के रक्त सैंपल से Y क्रोमोसोम STR DNA प्रोफाइल एक समान प्राप्त होने के आधार पर ये दोनों पैतृत्व वंशानुगत संबंधी है। सर बट काइंडली सी IO सर, इंस्पेक्टिंग ऑफिसर क्या कहते हैं वो? पैरा 23 अभियुक्त गण के रक्त नमूने को थाना आस्था में किस अवस्था और किसको सुपुर्द किया गया था, ऐसा कोई दस्तावेज प्रकरण के साथ प्रस्तुत नहीं किया गया। सर PW3 and PW5 does not support the prosecution story. The doctor PW3 and the witness of 5, the brother of PW3 पहले पढ़ लें। कौन से पैराग्राफ की? फर्स्ट पैरा ये पढ़िए। अभियोत्री लाइन सेकेंड, अभियोत्री शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ थी। कहाँ लिख रही हैं आप? PW3 सर। ठीक है, शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ थी। फिर अभियोत्री के आंतरिक एवं बाहरी शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं थे। अभिमत पीड़िता के साथ बलात्कार होने के संबंध में कोई निश्चित अभिमत नहीं है। ठीक है। फिर सर PW5 he also not supported the क्या है PW5? सर PW5 9 पैरा 9 yes. लास्ट 5 लाइन, अभियोत्री को रविंद्र का छायाचित्र दिखाए जाने पर उसे घटना कारित करने वाले में शामिल होना बताया नहीं बताना सॉरी घटना कारित करने वाले में शामिल होना नहीं बताया गया। सर काइंडली सी द डिफेंस विटनेस PW। एक मिनट रुक जाइए। PW9 जो है इंस्पेक्टिंग ऑफिसर, उन्होंने आइडेंटिफिकेशन ही नहीं करवाया। आपसे क्या समझना चाह रहे हैं आप? बात तो समझिए। जी जी जी
मुलजिम तो अपीयर होता होगा ना, तो मुलजिम का छाया क्षेत्र क्यों दिखाया जा रहा है? ये कहा जाएगा ना ये फलाना व्यक्ति जो सामने खड़ा सर तो पुलिस ने आइडेंटिफिकेशन नहीं करवाया, लिखा है सर उसमें PW9 में लिखा है सर, मैं आपको रीड कर दे रही हूँ। मैडम पुलिस ने आइडेंटिफिकेशन नहीं भी कराया तो डॉग आइडेंटिफिकेशन तो हो सकता था कोर्ट में। ये है कि नहीं, उसे फोटो क्यों दिखाएंगे जब इंसान खड़ा है? एडवोकेट ने करवा, अधिवक्ता ने दिखाया था सर, क्योंकि आइडेंटिफिकेशन कोर्ट में करवाया। अधिवक्ता कुछ भी दिखा उससे थोड़ा ना फायदा मिल जाएगा। ऐसा तो कोई प्रोसीजर ही नहीं या है। तो सर, ये, अरे भाई या तो ये होता कि वो मुलजिम मर गया है या उपलब्ध नहीं है, हैं? आपको इससे कोई मदद नहीं मिलने वाली है इन छाया चित्रों से। आप सर नोडल ऑफिसर डिफेंस विटनेस PW5 उन्होंने भी कहा कि फोन लोकेशन उस घटना स्थल का नहीं है। चलिए और कुछ बताइए। सर प्रोसिक्यूटर्स खुद प्रेजेंट है यहाँ पर, आप चाहें। मैं उससे नहीं, ये सब काम नहीं होता यहाँ। हम सर प्रोसिक्यूटर्स खुद कह रही रविंद्र नहीं है सर। हम ट्रायल नहीं कंडक्ट कर रहे हैं यहाँ पर, सॉरी। DNA रिपोर्ट है वो आप सर आप DNA एक बार, मैं फिर से बोलना चाहती हूँ DNA। 2 बार बोल लीजिए। नहीं सर, यस सर, हाँ ये मेरा। You conclude your argument and then we will dictate our order. सर अगर DNA में छेड़छाड़ नहीं की गई है तो सर काइंडली सी द पैरा 36 ऑफ द प्रोसिक्यूटर्स। Para 36 of the prosecutors, yes. जब मैं रिपोर्ट थाने एक मिनट सर, थाने गई थी तब मैंने नीले रंग की टी-शर्ट। नहीं सर, यहाँ द फर्स्ट लाइन, घटना वाली रात्रि को मैं और मेरा परिवार के सदस्य सोए नहीं थे। जब हम अगले दिन रिपोर्ट कराने गए तो हम बिना नहाए गए। सर जब बिना नहाए गए तो उसके प्यूबिक हेयर्स में क्यों नहीं मिले? फिर प्यूबिक हेयर में DNA नेगेटिव है सर। ठीक, और कुछ? सिर्फ सलवार में मिले सर। सर इसमें PW1 में बोला गया है कि रिपोर्ट डिले इन FIR सर, और डिले इन FIR है, और उन्होंने कहा है कि हमने रात में पहले चर्चा विचार विमर्श किया उसके बाद रिपोर्ट करवाई है। लिखिएगा। सर वो घटना स्थल पे तो प्रेजेंट नहीं है ना सर। ठीक है, वो सब लिखा रहे हैं, सुन तो लीजिए। अब आप आगे ऑर्डर सुनिए, उसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दीजिएगा। देख रहा हूँ कि कोर्ट ने परमिट कैसे किए। रिटायर हो गया। अभी जरूरी थी सर फिर 3 लोगों ने रेप किया, फिर एक नेगेटिव कैसे है सर? चलिए, हम आपके सवालों का उत्तर नहीं देने के लिए बैठे हैं यहाँ पर। सर फॉल्स इम्प्लीकेशन है सर। दोनों भाई थे, रात में मिलने गई, जो भी हुआ है सर वो प्रेजेंट ही नहीं था घटना स्थल पे। ठीक, नोडल ऑफिसर की रिपोर्ट भी यही कह रही है। ठीक। On the ground that firstly, prosecutrix herself has admitted that when photograph of Ravindra Elias Golu was shown to her, Ravindra Elias Deepu was shown to her, then she admitted that there may be difference in the photographs. Reading from the evidence of this witness PW2 in paragraph 25, it is submitted that when photograph of accused Ravindra was shown as contained in Article A3, then prosecutrix stated that he is not Deepu, then said that he is identical to Ravindra, full stop. It is further submitted that PW5 ही का बताया था ना आपने? PW3 and 5 not supported the prosecutor's story. PW3 and 5 have not supported prosecution case. नहीं, वो फोटो इसको भी दिखाया था ना 5 को। Sir, 5. Full stop. It is pointed out that even PW5 was when shown the photograph of the
TW5 has stated that, as stated in para 9, that when on 9/4/2023, members of Parmar community had collected an photograph of Ravindra was shown to the prosecutrix, and she had not identified Ravin to be involved in the incidents. Full stop. Further, it is submitted that in the DNA report, Y chromosome profile of two accused persons, Golu alias Anjul and that of the present appellant Ravindra alias Deepu Parmar, is identical, which is possible only when they are identical twins. Full stop. Reading from the report of the scientific officer Srimati Nidhi Gupta, as is contained in IA number 679 of 2025, it is pointed out that since Ravindra and Golu are not identical twins but are cousin brothers, the sampling itself is defective. Next para. Shri Yash Soni, learned Deputy Advocate General for the state, in his turn supports impugned judgment of conviction and submits that firstly, there are no doubts as to the method of sampling or to the test which was conducted by the experts. Full stop. It is pointed out that in para 11-12, it is pointed out that in para 11 of the report dated 29/1/25, it is mentioned that in the case, autosomal STR DNA profile of accused persons Golu alias Anjul and Ravindra Parmar was obtained, which is different from each other. Full stop. In the report produced before the court, details of autosomal STR DNA profile has not been given, but it was preserved separately in the laboratory records and has been enclosed as Annexure 4 and 5. Full stop. Next question. Thereafter, in para 12, it is mentioned that the autosomal STR profile, DNA profile obtained from the blood sample of accused Golu alias Anjul and that of Ravindra Parmar is not identical, and on the basis of that report, it can be said that both are not having relationship of monozygotic 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 twins. Next, in para 13, it is mentioned that Y chromosome STR DNA profile being similar for the accused Golu alias Anjul and appellant Ravindra Parmar reflects that both are having same ancestry from the side of their father. Full stop. Next para. Thus, it is pointed out that the plea taken by Srimati Neelam Jain, that since appellants are not monozygotic twins, their YSTR profile could not have been same, is answered by the scientific officer in para 13. Next para. It is further submitted that there was no occasion to show photograph of appellant Ravindra, especially when it is observed from the order sheet dated 8/4/2023 that Ravindra had appeared before the court through video conferencing. Full stop. Thus, such tactics on the part of the counsel for the appellant
to misguide the court will not be of any assistance. Next paragraph. As far as submission made by Srimati Neelam Jain, reading evidence of PW 9, that there is no explanation that as to how the samples were kept in the police station is also of no avail, in as much as counsel has failed to extract any degree of manipulation or tampering with the samples. Next paragraph. At this stage, Srimati Neelam Jain raises a new argument that prosecutrix is present in the court, full stop. She can be interrogated, full stop. It is further submitted that appellant Ravindra has lost his father and has a family to support, full stop. Thereafter, a new argument is advanced that there is overpopulation in the jails and we should take care of that. Next paragraph. Before coming to the merits of the case, it is necessary that courts are required to be cautious in their approach. Full stop. Melodramas in the court are not required to be attended to, as courts are not theatres but place where justice is dispensed with. Next paragraph. Thus, neither the overcrowding of jails can be a consideration to grant suspension of sentence, nor dependency of the family can be taken as the sole circumstance to show consideration dehorse the merits of the case. Next paragraph. As far as DNA report is concerned, comma, it is available on record as Exhibit P44 and that is positive qua both the appellants, namely Golu alias Anjul and Ravindra alias Deepu, full stop. Explanation for similar Y chromosomal DNA profile is given by the concerned doctor who has filed her affidavit on 29/1/2025 to the effect that ये पैरा 13 हिंदी में एज इट इज उतार लेना, ठीक है, और जहां पर भी वो अंग्रेजी के 3 बिंदु लिखाए थे ना, उसके नीचे या ऊपर हिंदी में उतार लेना, जिससे कि कहीं कोई भी भाषा का एक आध शब्द